Once again, a very good evening to all of you, dear students. As we were discussing about the chapter, this is the last chapter of your book, If I Were You. Okay, everyone, we were discussing about this. हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, right? Okay, guys. So before starting this half chapter from this book, okay, half of the points which we have left that from that we will start. Okay, before that, let me ask some question to all of you. Who will speak the half summary of this chapter? Half summary तक कौन बताएगा मेरे को पहले? Just raise your hand, guys. I have to see that. Raise your hand. और जो लोग raise hand नहीं करेंगे ना, I will ask from first them. सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगा. Those people they will not raise their hand. पीयूष बोल रहे हैं सर भी. Okay, very good. Okay, guys. Students, raise your hand. चलो बस मनीष, आप मेरे को सबसे पहले बताइए तो कहाँ तक हमने कवर किया था? Yes, sir. Sir, page number 140. 140, ओके. क्या क्या आपने पढ़ा था इसमें, आप मेरे को बताइए थोड़ा सा. Sir, summary या फिर बताइए क्या समरी में पढ़ा था हमने. sir, this play was written. This play is written by Douglas James. Douglas James. Yes, sir. Douglas James. The scenario starts from a small cottage interior. There are two gates in the cottage. The first one is the right, which is the back gate, which was not practical, and in the left there was a door which was a practical door. The scene starts. Firstly, Jerome was talking to someone. He was telling that he's going someone and leaving the house in 10 minutes. Suddenly, when he goes uh, uh, to the bed and started packaging, uh, an intruder came inside, and Gerard nonchalantly said, "What a surprise!" And intruder uh, said that I you I am glad that you are pleased to see me, but I think that you will not be pleased for long, and that a conversation starts between both. The intruder say him to put up Okay. put up the hand put up his hands up. Okay, Manish. After that. Yes, sir. Okay, next. Nakhat. Manish, try to speak more. Okay, this is not quite enough. I hope that you will speak well from the next class. Okay. Nakhat. Sir, Yes, speak. sir, this story is written by Douglas James. There were two characters. One is Gerard, and another is an intruder. An intruder is a person who enters anyone house without any permission. Once Gerard leave alone in a cottage. Cottage has two doors. One Yes, continue. cottage has
Cottage has two doors and and a table towards the left. The table has a telephone and one or two chairs and a divan. Gerard was a height man, wearing a horn-rimmed glasses and a great coat. His voice seemed to be cultured and he was seemed to be educated. One day, Gerard packing his bags for somewhere. Suddenly, he saw an intruder having same appearance as of Gerard. The intruder said Gerard for his paws up. The intruder asked for his paws up and um, asked for Gerard if he cannot ask, and he then asked Gerard that can he ask some question. Then Gerard replied, "Yes, you can." Then Gerard started telling his childhood story. The intruder said that. Not to have funny talks. The intruder asked if Gerard leave alone. Then Gerard replied that what if he did not answer. The intruder said that he will hurt him and get all of his answers. The intruder then asked if Gerard drive car. Gerard replied no, but after some time he accepted that he has a car, but he has a car in the garage. Sir, done. Very good. Now next, Prachi. This is a story written by. Okay, in this Okay. story, we are gonna to know that there is a person named Gerard, and we are gonna to see that Gerard lives alone in a lonely cottage, and an intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard on taking his identity. So the story starts with a scene in a small cottage interior. We saw that the intruder gets into the Gerard's house, and he starts asking Gerard about what he does and did he know how to drive or not. After that, we come to know that Gerard was being very cool. He was not being very comfortable with him. So intruder said, so he said intruder that I wanted to be in comfortable position for answering your all the questions. Then the intruder said that you can sit down here. After that, we see that Gerard started asking Gerard about did you know how to drive the car, and then the Gerard replied that the Gerard replied that if I don't answer, so the intruder was asking him the question again, and then he came to know that there is a car which is kept in the garage of Gerard. Yes, sir. Done. Okay, very good. Now Nikhil. Nikhil. Who is that? Aryan. Yes, Aryan, speak. Who has raised your hand? Now moving ahead to Tanisha. Tanisha, am I audible? Am I audible, Tanisha? She is not attending the class, only online. Good. Aryan, yes. Yes, Aryan. Continue. Say,
The Yes, chapter speak. name is this chapter name, if I were you, if I were you. Firstly, we will start with introduction. This play is about a person named Girard, how he is being escaped by an intruder who has Yes. who still his identity, live peacefully. Girard Very fools good. the intruder. Sir, I am Okay. audible. Yes, yes, you are audible. Girard fools the intruder and confines him in a cupboard, and finally he hands over to the sergeant. So let's start the full explanation. Okay. So a person named Dad who lives in a small cottage. It is an who lives in a small cottage. There is another door to left, most of a practical door. In his house, there is furnitures are simple, consisting of two tables towards a left, and a chair towards the left. So when the intruder entered the Girard was standing by making a phone call. He was he is of medium height and wearing a horn rimmed glasses. He dressed he is dressed in a longian suit and a Okay, Aryan, great coat. is it possible to open your camera? Aryan, Yes, sir. now speak. So, sir, when he enters, then the intruder comes. Then the intruder come in his house, in his house, and then the giraffe, sir. Giraffe was telling I expect I accept I is still here, and you must round it good. He said to someone, goodbye. I will meet you in 10 minutes. And then the giraffe opened and then the giraffe opened the doors. Then he found that intruders come then he find that the intruder comes in her house, and he said that I am glad you are pleased to see you are pleased to see me. I don't think I don't think you will be pleased for long. Okay, Aryan, you are speaking really good, but there is a need to improve yourself, okay, while speaking. You must have to do lots of practice while speaking, okay? आनी बात समझ में ना? Yes, sir. First of all, you have to set whatever Yes, sir. you have to speak in your mind, and after that, try to speak in English, okay? That will be a very good way to speak and getting. Now, moving ahead, Yes, guys. sir. Except Prachi and Aryan, who wants to speak? कौन बोलना चाहता है उसके बाद? Last, guys. Raise your hand at last who want to speak. Tanisha, she is only in the class but not responding. Shreya, Shreya, Yes, sir. just speak about this chapter. Yes, sir. So this chapter is written by Douglas James. In this chapter, we have seen two characters, Gerard and Intruder. Intruder is one who enters someone's house illegally, and who enters someone's house illegally. Gerard lives alone in a lonely cottage. Intruder's intention is to murder Gerard and takes on his identity.
We will see something. Now we will look on Gerard house. This in his house there is an entrance back right, and there is a small table towards the left, a chair and a divan rather upstairs on the right. There is a telephone also on the table. Uh, uh, when the curtain rises, we saw that Gerard was talking to someone, and after his conversation, he started packing. While he was engaged in his packing, intruder enters his house silently, and by mistake, he bumps accidentally against the table. And this sound was heard by Gerard, and he turns quickly back. After all this, intruder told Gerard to make his paws up, and Gerard did all this without with patience. He was not showing that he has been so afraid. After this, intruder starts asking questions from Gerard, and he was answering. He was answering nonchalantly. Firstly, he asked his name, his Christian name. Then Gerard answered that his Christian name was Vincent Carls. Then intruder asked that, "Do you run a car?" Then at first Gerard said no, but then intruder told that you are lying, and you are not dealing with any fool. So after saying all this, Gerard said that I I have a car, and this is in my garage. Sir, ओके वेरी गुड. नाउ मनीष काफी देर से बोल रहा है कि सर रजनीश से भी आप पूछ लीजिए. सो रजनीश. रजनीश. Rajneesh, some of the students are not responding. Why? Okay guys, so let's start. As we have completed, afterwards we are just going to read. आप सबने सभी ने काफी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बताया. कुछ लोगों का जो समरी बोलने का तरीका था, लिटिल बिट यू पीपल हैव टू इम्प्रूव. ओके, माइंड को क्लियर रखना है कि कब हम लोग किस पॉइंट को पुट करेंगे. अदरवाइज इट वाज रियली नाइस. मूविंग अहेड गाइस. सो एज वी हैव कंप्लीटेड, आई थिंक हमने इस पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था ना. हाँ या ना, एक बार बोलिए फिर से, मैसेज करके बताओ सब. You seem to have taken a considerable amount of trouble since you know. Okay, text message guys. Text your message. ओके चलिए, हम लोग पढ़ लिए थे. यस सर. अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग. यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी. अब देखो जिराट बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है ना कि कुछ तुमने ट्रबल लिया है, तुमने कुछ ट्रबल लिया है. व्हाई हैज ही सेड सच काइंड्स ऑफ वर्ड. इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जैसा कि हमने आगे देखा था, वहां पे उन्होंने मेंशन किया था कि कुछ ही लोग ट्रबल करते हैं, कुछ ही लोग ठीक है ना परेशानी उठाते हैं मुझसे मिलने के लिए या मेरे बारे में उत्सुक होते हैं जानने के लिए. यहाँ पे जेरार्ड को मालूम चलता है कि कुछ बहुत कुछ पहले ही से इंट्रूडर मेरे बारे में जानता है. तो एक तरीके से वो अपनी बातों को व्यक्त करता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने ना बहुत ज्यादा तकलीफ उठाया है मेरे बारे में जानने के लिए. ठीक है ना. वांट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ. क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे, केवल मेरे बारे में ही पूछ रहे हो. यू हैव बीन सो मॉडेस्ट. यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था. ओके राइट. आई कुड टेल यू प्लेंटी. ठीक है ना. इंट्रूडर बोला है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ. यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. ठीक है ना. तो बोल रहा है आई कुड टेल यू प्लेंटी. यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप
of class round here. I have got brains and I use them. That is how I have got where I have. ठीक है ना? अच्छा, पेज नंबर 140 में बाकी था कुछ. चलिए यहाँ से देखते हैं. ठीक है ना? कीप इट योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. ठीक है ना? बोलता है कि अपने पास रखो. ठीक है, मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए कि जिप्सी कौन तुमको उठा के ले गया, बच्चे थे उस समय से. जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसी का आंसर आप दो मुझे. यू नो यू लिव हियर अलोन. तुम यहाँ पे अकेले रहते हो. वेयर डू यू? Gerard, I am sorry. I thought you were telling me, but not asking, as question of inflection your voice is unfamiliar. अब जेराड बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, बाकायदा आप मुझे बता रहे हैं. ठीक है ना? अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है ना? इन्फ्लेक्शन करने का मतलब क्या? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. मॉड्यूलेशन ऑफ टोन. जो उनका बोलने का टोन था ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ऐसा अनफैमिलियर आ रहा है, इससे मेरे को नहीं लग रहा है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ. इंट्रूडर विथ एम्फेसाइजेस, डू यू लिव हियर अलोन. अब इंट्रूडर क्या करता है ना, अपने क्वेश्चन पर दबाव डालता है, जोर डालता है और बोलता है. ठीक है ना? एम्फेसाइजेस करने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी सेंटेंस को दबाकर विशेष फोर्स डालकर बोलते हो, दैट इज गुड. ओके, उसी को हम लोग एम्फेसाइजेस बोलते हैं. डू यू लिव हियर अलोन जेराड. एंड इफ आई डोंट आंसर, जेराड बोलता है कि अगर मैं आंसर ना दूं तो. इंट्रूडर बोलता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. इंट्रूडर बोलता है तुम्हारे पास पर्याप्त सेंस तो होगा ही ना, तुम अपने आप को हर्ट पहुंचाना नहीं चाहते हो. अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो मैं क्या कर दूंगा. ठीक है? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे कि हर्ट कर दूंगा. क्या बोल रहे हो अक्सर? दैट्स बेटर से बताना था. दैट्स बेटर से, चलो कोई बात नहीं, यहीं से देखते हैं हम लोग. ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करो, यहीं से देखते हैं. ये हम लोग फिर से देख रहे हैं. ठीक है, अब देखो. इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन द डिजायर टू डू सो. व्हाट डू यू थिंक मिस्टर एल. अब देखो, जिराड बोलता है ना कि जहां तक मेरा सवाल है, ठीक है ना, तो अच्छा बात ये होता है कि हम क्या करें ना, कि पेन को, किसी चीज को, पेन को अवॉइड करें, दूसरे हटे. आपका क्या क्या नाम है? व्हाट डू यू थिंक मिस्टर एल. कौन पूछता है? जिराड पूछता है. एल, व्हाई डू यू, ही सेज ऑलवेज. एल, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. Why does he says always? Ir, you know very well about that, guys. कि वो ir क्यों बोलता है हमेशा? इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर बेटर्स. तो इंट्रूडर बोलता है ना कि मेरे नाम के बारे में मत सोचो कि मेरा नाम क्या है. ठीक है ना? मेरे को तुम्हारा नाम पसंद है मिस्टर जेरार्ड. व्हाट आर योर क्रिश्चियंस नेम. तुम्हारा क्रिश्चियंस नेम क्या है? तो जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स. कि मेरा क्रिश्चियन नेम क्या है? तो विंसेंट चार्ल्स है. इंट्रूडर, डू यू रन अ कार. इंट्रूडर पूछता है क्या तुम कार चलाते हो. जेरार्ड बोलता है नो. इंट्रूडर, दैट इज अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल. अब देखो, इंट्रूडर बोल रहा है ना कि तुम झूठ बोल रहे हो. तुमको क्या लगता है कि बेवकूफ से तुम बात कर रहे हो. आई एम एज स्मार्ट एज you and smarter, and I know you run a car. Better to be careful, wise guy. Okay, अब देखो क्या बोलते हैं. यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, यानी कि तुम किसी बेवकूफ से बात नहीं कर रहे हो. ठीक है ना? कि आई एम एज स्मार्ट एज यू, यानी कि मैं उतना ही चालाक हूं जितना कि तुम हो. बाकायदा, और इवन ये बोला जाए कि मैं तुमसे भी ज्यादा क्या हूं, तो स्मार्टर हूँ. ठीक है ना? तुमसे भी ज्यादा चालाक हूँ. एंड आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो. बेटर बी केयरफुल, सावधान रहो. ठीक है ना? बुद्धिमान इंसान थोड़ा सा सावधान रहो. जेरार्ड बोलता है आर यू अमेरिकन. जेरार्ड बोलता है क्या तुम अमेरिकन हो, और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेशन, गाइस? यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इमिटेशन. इमिटेशन का मीनिंग बताइए. आई एम जस्ट गोइंग टू सी who is going to give me first answer of imitation. Let us see that. Who is that person? आर्यन बोल रहे हैं सर कॉपी करना. वेरी गुड, कॉपी करना होता है, नकल करना होता है. ठीक है,
आगे बात समझ में? तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम अमेरिकन हो, क्योंकि उसके एक्सेंट से लग रहा था जैसे होता नहीं हम लोग का बोलने का टोन, इट सीम्स दैट वी आर बिहारी। Okay, so according to the intruder voice, he was realizing that whether he is an American or not. तो वो क्लियरली जेरार्ड पूछ रहे हैं कि क्या तुम अमेरिकन हो या तुम क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो। तो इंट्रूडर बोला, लिसन दिस गर्ल्स नो टॉय, ठीक है ना, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। बोल रहा है ना कि ये जो बंदूक देख रहे हो ना, ये खिलौना नहीं है, ठीक है ना, मैं इससे तुमको क्या कर सकता हूँ, चोट पहुंचा सकता हूँ। आगे मैं समझना, इवन मैं तुम्हें मार सकता हूँ बिना मारे, पहुंचा सकता हूँ, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, ठीक है ना, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ बिना तुम्हें मारे, और उसके बाद भी मैं सारा आंसर तुमसे निकलवा सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, एंड यू विल टेल मी, तुम मुझे बताओगे भी। जेरार्ड बोलता है, ऑफ कोर्स आई विल, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। अब बोलते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो जेरार्ड है वो पूछ रहे हैं कि आर यू अमेरिकन और इट्स दैट्स मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, ठीक है। तो ये इंट्रूडर बोलता है, लिसन दिस गर्ल्स नो टू आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट्स माय आंसर, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, हमने इसके बारे में बात कर लिया था। जेरार्ड, ओ ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, आई डू पोसेस अ कार्ड एंड इट इज द गैरेज अराउंड द कॉर्नर। देखो, तो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, पहले एक मेरे भी अच्छा होगा ना कि तुम इस बंदूक को रख दो, मेरे पास एक कार है जो कि अभी कहाँ पे है, तो कॉर्नर में गैराज में लगा हुआ है। इंट्रूडर, दैट इज बेटर, ये हुई ना बात, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। अब पूछता है क्या यहाँ पर लोग आते जाते हैं। तो अब देखो जिराट बोला, वेरी रेयरली सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। अब देखो यहाँ पे ट्रबल वर्ड यूज किया गया है, इस बात को याद रखना है, इसकी जरूरत हम लोग को आगे भी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि ट्रबल वर्ड का यूज किया गया है, बोला है कि बहुत ही कम, ठीक है ना, और सरप्राइजिंगली यानी कि बहुत ही कम लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, कष्ट उठाकर मिलने के लिए आते हैं। देयर इज द बैकर, द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देयर इज अ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। अब देखो बताता है कि कौन कौन आते हैं मेरे से मिलने के लिए, तो बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, और ऑफ कोर्स मिल्कमैन भी आता है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जितना ना, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग नहीं है उसमें से, ठीक है। इंट्रूडर बोलता है, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। अब इंट्रूडर बोल रहा है ना कि मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कभी भी तुम्हारे पास ना ट्रेड्स पीपल को नहीं देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब बताना है आपको, व्यापार करने वाले लोग, मैंने बताया। ओके, कितने लोग आप लोगों में से बताना चाहते हैं? टेल मी गाइस। पुट योर मैसेज। बिजनेस सर, बिजनेस। यस, यू ऑल आर राइट।
तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, देखा हमने, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी अ ट्रेड्स पीपल, यानी कि मैंने देखा कि अक्सर तुम, ठीक है ना, किसी भी व्यापारी, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, बिजनेसमैन है, उनसे तुम नहीं मिलते हो। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो जिराड क्या बोलता है, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। अब जिराड बोलता है ना कि मुझे लगता है कि तुमने काफी कुछ ट्रबल, परेशानी उठाया है। इट मीन्स ट्रबल मीन्स व्हाट, मुझसे, मेरे बारे में जानने के लिए, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, केवल पूछते जा रहे हो, अपने बारे में कुछ तुम बता ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो कुछ अपने बारे में बताओ। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, वो बोल रहा है ना कि इंट्रूडर बोल रहा है कि मैं तुम्हें बता सकता था बहुत सारा कुछ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुमको क्या लगता है कि तुम ही स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, ठीक है ना, मतलब कि अगर स्मार्ट की बात हो तो सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है? मैं हूँ सबसे, ठीक है ना, अगर इसका सिलसिला देखा जाए तो मैं टॉप पे आता हूँ स्मार्ट में, ठीक है। कौन बोल रहा है? इंट्रूडर बोल रहा है ऐसा। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, बोला है ना मेरे पास दिमाग है, मैं उसका यूज भी करता हूँ। दैट इज हाउ आई हैव गॉट वियर आई है, और यही कारण है ना कि मुझे जहां होना चाहिए अभी मैं वहीं पे हूँ। जिराड, एंड वियर प्रिसाइजली हैव यू गॉन? आई डिड रिक्वायर्ड अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। अब देखो जिराड बोलता है ना कि ठीक ठाक अगर सही में बताओ तो तुम्हें, ठीक है ना, ये कैसा मतलब कि दिमाग है कि तुम क्या करते हो कि किसी के घर में घुस जाते हो, वो भी गलत तरीके से, तो ये कौन सा दिमाग हुआ? ठीक है ना। When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. अब देखो इंट्रूडर बोल रहा है ना, when you know why I have broken into your little cottage, तो इंट्रूडर बोलता है ना कि जब मैं, तुम ये जानोगे कि मैं तुम्हारे कॉटेज को में क्यों घुसा, ठीक है ना, यू विल बी सरप्राइज, तुम क्या हो जाओगे? सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन ये सरप्राइज ना काफी देर तक नहीं रहेगा, और ये सरप्राइज जो है तुम्हारे लिए प्लीजेंट नहीं देगा, ठीक है ना, ये खुशी नहीं मिलेगा। ऐसे होता है ना, कुछ सरप्राइज देख के हम लोग खुश हो जाते हैं, दैट विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, इसमें आपको खुशी नहीं मिलने वाला है। ओके, जेराड बोलता है विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टेबल, बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्बैरेस और अरंट यू अ स्पेशलिस्ट? अब देखो जेराड पूछता है, अच्छा जैसे कि तुम कर रहे हो, मेरे को एक बात बताओ, क्या मतलब कि तुम किसी क्राइम में पार्टिकुलरली हो, ठीक है ना, यानी कि किसी का कत्ल करने वाला या लूट करने वाला कोई तुम्हारा पार्टिकुलरली होगा ना? आर यू अ स्पेशलिस्ट? अब इंट्रूडर बोलता है माई स्पेशलिटी ज्वेल्स रॉबरी। अब देखो यहाँ पे वो बताता है कि वो ज्वेलरी का रॉबरी करता है, ठीक है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। अरे बस समझ में था, तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो कार है इसमें मेरे वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और डैंडी बस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैंडी? यू पीपल हैव टू टेल मी, बताइए तो आप लोग मुझे डैंडी का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैंडी गाइस, टेल मी। Apurva is telling excellent. Okay. Okay, excellent. Afterwards, प्लीजेंट माइंड, नॉट प्लीजेंट माइंड सकेत। यहाँ पे डैंडिंग का मतलब होगा ना फैशनेबल बस, ठीक है ना, फैशनेबल बस है, एक्सीलेंट बस है, स्टाइलिश बस है, यू कैन से दैट। ओके, जेराड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि वो जेराड क्या हो रहा है, थोड़ा सा डर रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे ज्वेलरी, यहाँ पे तो तुमको ज्वेलरी कहीं कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह पे जो एक्स ये जगह है, उस जगह का नाम क्या था? वाइल्ड्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है, इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स। और इंट्रूडर बोलता है हाँ यहाँ पे तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई पुलिस वाले भी देखने को नहीं मिलेंगे। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, और बोला है ना कि कुछ समय के लिए मैं आराम से यहाँ पे रह सकता हूँ। जेरार्ड, यू मीन टू लिव विथ मी अ ट्रिपल सडन, इजंट इट? यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। अब देखो जेरार्ड बोलता है कि यू मीन टू लिव विथ मी, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ठीक है ना, और वो एक रिएक्शन देता है और बोलता है कि आपको मैंने तो इनवाइट नहीं ना किया है,
तो आप कैसे आके यहाँ पे रह सकते हो। इंट्रूडर बोलता है यू वांट बी हियर लॉन्ग सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, ठीक है ना। वो बोलता है ना कि इंट्रूडर बोलता है कि तुम यहाँ पे अब ज्यादा देर तक रहने वाले हो नहीं, ठीक है ना, अब रहने वाले हो नहीं कि जीवित रहने वाले नहीं हो, आगे बात समझ में ना, आगे समझने को मिलेगा। सो मैंने ये तुमको ना परेशानी नहीं किया, ठीक है, तुमसे पूछने के लिए मैंने ट्रबल नहीं किया, ठीक है। जेरार्ड व्हाट डू यू मीन, जेरार्ड बोलते हैं इसका मतलब क्या है। इंट्रूडर बोलता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारा बिग सरप्राइज है, दैट आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा गाइस। अब यहाँ पे आ गया इंटेंशन, एक्चुअली वो इंट्रूडर उसके घर में जाकर जेरार्ड को मारकर वहां पे रहना चाहता था, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, तो एक रॉबरी करता था, ठीक है, पुलिस उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब वो पार्टिकुलरली जगह चाहता था कि जहाँ पे वो आराम से रह सके, और वो देख रहे थे ना कि वहां पे दूर दूर तक घर भी नहीं था कोई, और इसका अपीयरेंस जो इसका हाइट था, बॉडी पोस्चर था, वो किससे मिलता था, जेरार्ड से मिलता था, ठीक है। अब देखो बोलता है जेरार्ड अ लिटिल हैरास इजंट इट, तो बोलते हैं कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया कठोर ये। अब देखो इंट्रूडर विथ heavy sarcasm, yeah I will be sorry to do it, I have taken a fancy to you but it is just got to be done। अब देखो सरकाजम का मतलब क्या होता है हमें बताओ तो आप, टेल मी गाइस, नहीं बताइए, आप सभी बताइए। अपूर्वा इज गिविंग रिप्लाई, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, आप सभी रिप्लाई करो। Okay, as Ananya is saying that saying word in such a way that it seems opposite of what is being actually said. Very good. यही मीनिंग होता है एक्चुअली, वो जो बोलने का जो विपरीत तरीका होता है ना, किसी चीज को अपोजिट वे में बोलना, ठीक है, उसी के लिए यूज किया जाता है। अब बोलता है सॉरी आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज जस्ट गॉट टू बी डन। अब देखो जेरार्ड व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, अब बोल रहा है ना कि तुम रॉबरी करते हो तो उसमें मर्डर क्यों करना चाहते हो, ये बताओ, ये रॉबरी करते हो उसमें एक और तो अपना क्राइम्स ऐड करना चाहते हो, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, और बोलता है ना कि बहुत गलत कदम तुम उठा रहे हो, बहुत बड़ा गलत कदम तुम उठा रहे हो, ठीक है। इंट्रूडर बोलता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर fun, I have been haunted long enough, I am wanted for murder already and they can't hang me twice। अब देखो बोलता है ना कि मैं फैन के लिए, ठीक है ना, फन के लिए कोई स्टेप नहीं उठा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने मर्डर किया है, ठीक है, और उसके बाद से पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, अगर तुमको मार भी देता हूँ तो मेरे को ठीक है ना, कोर्ट सजा 2 बार फांसी की नहीं देगी, एक ही बार देगी, सारी बात समझ में, 2 बार मुझे फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ाया जाएगा, सारी बात समझ में। अब जिराड बोलता है इट मीन वो पहले भी एक मर्डर कर चुका था गाइस, अब कितना वो खूंखार था, यू कैन अंडरस्टैंड। जिराड यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुअस डबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। अब देखो, अब जिराड बोलता है ठीक है जो तुम बोल रहे हो सही है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ग्रेजुएस का मतलब क्या होगा, ठीक है, डन विदाउट रीजन, डन विदाउट रीजन, बिना किसी रीजन के किसी को मारना, ठीक है। अब देखो बोला है कि ठीक है मैं एडमिट करता हूं तुमसे, बट तुमको इससे फायदा क्या मिलने वाला है ये मेरे को बताओ, सॉरी, बट हैव यू टू गेन, हाँ विदाउट गुड रीजन, यस, वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दैट, you are planning a gratuitous double, so to speak admitted you have nothing to lose but what have you to gain, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछते हैं, जेरार्ड उससे पूछते हैं, ठीक है, कि देखो हम समझ सकते हैं तुम्हारी बात को, लेकिन एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इससे तुमको फायदा क्या होगा ये मेरे को बताओ ना, ये मेरे को बताओ कि तुमको प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, अगर तुम मुझे मार डालते हो देन व्हाट विल यू गेट प्रॉफिट। तो बोलता है इंट्रूडर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, तो बोलता है ना कि मुझे फायदे में क्या मिलेगा ना, फ्रीडम मिलेगी, आजादी मिलेगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, व्हाट डू यू मीन बाय पुअर हंटेड रैट, तो जैसे कि देखते हो ना रैट्स क्या करता है, हमेशा निकलता है और तुरंत अपने होल में भाग जाता है, ठीक है ना, उसको अब बोल रहा है कि आई एम अ पुअर हंटेड रैट, यहाँ पे वो बताना चाहता है कि मेरे पीछे पुलिस काफी, ठीक है ना, तेजी से लगी हुई है और चारों तरफ मुझे ढूंढ रही है, अरे बस समझ में ना, मैं कहीं पे भी फ्रीडम से घूम नहीं सकता हूँ, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। जैसे ही मैं तुमको मारूंगा एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेस एंड डू नथिंग, आई कैन ईट विल वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। और बोलता है ना कि जैसे ही मैं विंसेंट चार्ल्स बन के रहूंगा तो मैं आराम से कहीं पे जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, खा सकता हूँ, ओके, और मेरे को कभी भी पुलिस को देखकर डर भी नहीं लगेगा छुपने के लिए, ठीक है।
In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. अब जिराड देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि मैक्सिमम मेलोड्रामास में हम लोग देखते हैं ना कि विलेन वेट करता है, ठीक है ना, किसी को मारने के लिए वेट करता है, जब उस पे क्या होता है, उल्टा उसी पे क्या हो जाता है, डेंजर आ जाता है, यानी कि कोई उसको मारने के लिए आ जाता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि यू आर मच लकियर, कि तुम क्या हो, काफी ज्यादा लकियर हो, ठीक है ना, इस मामले में। अब देखो ये क्यों बोला जेरार्ड इस बात को, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, वो इसलिए बोल रहा है आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना। इंट्रूडर बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पास हर एक काम के लिए कोई ना कोई रीजन रहता ही है। आई एम गोइंग टू बी विजिट चार्ल्स जेरार्ड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। अब देखो बोलता है ना कि मैं क्या बन जाऊंगा, तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊंगा, और देखो कैसे विंसेंट बात करता है। एक्चुअली ही हैज हर्ड, उसने बात सुना था जब वो फोन पे बात कर रहा था, उसी से वो पीछे से आया था। अरे बस समझ में, तो देखो बोलता है कि मैंने ये भी सीखा है कि वो कैसे बोलता है। नाउ आई नो दैट पोस्ट स्टफ कम्स इजी, दिस इज मिस्टर VC Gerard's speaking pantomime of phoning in the imitation culture's voice. And that is not all. He stands up, gets up a minute. Gerard's नाउ ही टेक्स अ लुक एट मी। अब देखो क्या करता है ना, वो सबसे पहले तो खड़ा होकर उसको पहले बात करके दिखाता है कि कैसे विंसेंट बात करते हैं, उसकी कॉपी उतारता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे पेंटोमियन बोला गया है। अरे बस समझ में ना। दूसरी बात वो क्या करता है, खड़े होकर उसको दिखाता है कि देखो कैसे वो स्टैंड होता है, इवन मैं उसको एक तरीके से स्टैंड भी हो सकता हूँ, इट मीन तुम्हारे तरीके से। अब देखो जिराड बोलता है यू आर नॉट अ पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, मतलब तुम सही तरीके से नहीं दिख रहे हो मेरी तरह। अरे बात समझ में ना, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, यानी तुम सही तरीके आकर्षित नहीं दिख रहे हो, मेरी तरह का नहीं दिख रहे हो। इनटू द नोवेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव only to wear specs and I will be enough like you to get away with it। बोला ना स्पेक्स, जैसे कि हम देखे थे ना कि पतला रिविल टाइप का वो स्पेक्टेकल्स पहनता था जिराड, तो बोल रहा है कि मैं आपकी तरह का अगर जैसे ही चश्मा पहन लूंगा, आई विल लुक लाइक यू। आगे बात समझ में ना, कि मैं आप ही की तरह दिखूंगा, आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, ठीक है ना, यानी कि जैसे ही मैं इस पे स्पेक्टिकल लगाऊंगा आपकी तरह दिखने लगूंगा और ये पर्याप्त होगा। जेरार्ड बोला व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, दे विल लेट यू डाउन इन योर नॉट केयरफुली, ठीक है ना। वो बोल रहा है ना कि अच्छा तो कपड़ा के बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारे पास कपड़ा है, अगर जैसे कि मैं जिस टाइप का कपड़ा पहनता हूँ, अरे बस समझ में, उस तरीके से तुम पकड़े जाओगे, ठीक है, अगर तुम्हारे वियरिंग स्टाइल मेरे जैसा नहीं होगा तो। इंट्रूडर बोलता है दैट इज वी ऑल राइट, योर्स विल बी फिट मी फाइन। तो बोलता है अरे कोई बात नहीं, जो आपका कपड़ा है ना, आपके मारने के बाद वो तो मेरे में अच्छा लगेगा ही ना, जैसे ही आपको किल करूंगा उसके बाद सारे आपके कपड़े भी मैं पहनूंगा, वो मेरे में फाइन होगा। I know very well about that, Gerard. That is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence, but you won't kill me for a good reason. ओके अब देखो बताता है, जिराड बोलता है ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बोलता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम मेरे एक पॉइंट पर मिस कर गए। मैं जो मैंने बोला, आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स, यानी कि जो मेलोड्रामेटिक कहने का मतलब क्या, जो सीरियल देखते हो ना उसमें जो विलन होता है, कि उस विलन से क्या हो, तुम बहुत ज्यादा लकियर हो, लकीएस्ट हो। कैसे लकीएस्ट हो, तो इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, और मैं तुमको वहां पे ना तुम्हारे चालाकी को ट्रिब्यूट मतलब कि ठीक है ना अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, मैंने तुमको एक मार्क दिया था कि इस बात से तुम समझो, ठीक है। इट वाज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वांट किल मी फॉर अ गुड रीजन, और बोल रहा है ना कि यू वांट किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकते हो एक अच्छे रीजन के कारण। यहाँ पे एक अच्छा रीजन कहना क्या चाहता है, कि जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम्हारा पर्पस है, कि मेरे आइडेंटिटी को तुम अपना लोगे मारने के बाद, तो इनडायरेक्टली वो यही बोल रहा है कि गुड रीजन के कारण तुम मुझे नहीं मार सकते हो। आखिर क्या बात है भाई, लेट्स अंडरस्टैंड। इंट्रूडर बोलता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, क्या तुम सोचते हो जेरार्ड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड शूट सुनर। और बोलता है ना कि तुम मुझे जाने दोगे, और थैंक्स भगवान का कि तुमने मुझे पहले गोली नहीं मारा। इंट्रूडर कम ऑन, व्हाट इज ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। अब बोलता है ना कि अरे चलो बताओ, इंट्रूडर बोलता है ना कि अरे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में, कि मेरे को बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये कन्वर्सेशन हम लोगों के बीच में चल रहा है वो मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, ठीक है, डायरेक्टली बताओ। जेरार्ड, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड
taking on my identity. जेराड बोलता है ना कि तुम्हारा आइडिया ये था, ठीक है ना, कि मेरी आइडेंटिटी को लेके और पुलिस से बच के रहने का, ल्यूड मतलब बच के छिप के रहने का, ठीक है। इंट्रूडर बोलता है यस आई लाइक द आइडिया, यही आइडिया था, ठीक है। आगे बात समझ में गाइस। जेराड बट आर यू श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू? तो जेराड बोलता है क्या तुमको सही में लगता है कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, बढ़िया होगा? आगे बात समझ में। इंट्रूडर नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन, things went wrong and I killed a cop. Since then I have done nothing but dodge. अब देखो क्या बोलता है इंट्रूडर, बोलता है ना नाउ लिसन हियर, ध्यान से सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, ठीक है ना, मैंने ये सारा प्लान बनाया, ठीक है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं टाउन में जॉब किया करता था। दिस वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैं कुछ मेरे से गड़बड़ हो गया वहां पे, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक पुलिस वाले को मैंने वहां पे मार डाला। सिंस देन, उस समय से मैं अभी तक छिपकर रहता हूँ, ठीक है। जेरार्ड एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्राउट यू, और यही कारण है ना कि वो तुमको छुप छुप के भागना यहाँ पर लेकर आया है। ओके गाइस। Intruder, it brought me to Aylesbury, that is where I saw you in the car. अब देखो Aylesbury is a place, वहां की बात कर रहा है, तो बोला है ना कि it brought me to Aylesbury, यह Aylesbury में मेरे को लेके आया और वहां पे मैंने तुमको पहली बार देखा था कार में। Two other people saw you and started to talk, और दो पीपल तुमको देख रहे थे, दो लोग तुमको देख रहे थे और तुमसे बात करना चाहते थे। I listened, it looks like you are a bit queer kind of mystery man, और ये महसूस हुआ ना कि तुम थोड़ा सा अजीब इंसान हो और मिस्ट्री मैन हो, ठीक है। जेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, वही बोल रहा है। आप देखो जेरार्ड बोले वही तो मिस्ट्री मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इंट्रूडर, disgrading him, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same, those are just things I want to do, hearing about you was one of my luckiest breaks। अब देखो बोल रहा है ना कि जैसे कि तुम्हारा काम, तुम फोन पे बात करना, किसी से बहुत कम लोगों से मिलते हो, ये सारा कुछ ही तो मैं चाहता था, और सबसे लकीस्ट टाइम ये रहा ना कि मैंने तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना जब तुम दूसरे लोगों से बात कर रहे थे। जेरार्ड, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested this clock of mystery। अब देखो जिराड बोल रहा है कि अच्छा तुम ये भी तो पूछ सकते हो ना कि आखिर तुम इस तरीके से क्यों रहते हो, बहुत कम लोगों से बात करते हो, बहुत अलग साइड में रहते हो, तो ये भी तो तुमको पूछना चाहिए ना कि आखिर ये क्या कारण है, किस कारण से मैं ऐसे रहता हूँ, ठीक है। मेरा तो तुमको वो चीज अच्छा लगा कि जैसे वो रहता है मैं रह सकता हूँ, क्यों, बिकॉज वो बहुत कम लोगों से बात करता है, अलग जगह पे रहता है, बहुत कम लोग उसके पास आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसका बिहेवियर भी स्ट्रेंज है, आखिर क्या कारण है कि जो मेरा यह सारा कुछ तुमको पसंद पड़ा। अब चलो मैं तुमको इसके बारे में बताता हूँ। इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, अब इंट्रूडर क्या करने वाला था, उसको शूट ही करने वाला था। एज आई सेड बिफोर, उसके पहले उसने बोला दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये कन्वर्सेशन मेरे को क्या कर रहा है, बोर कर रहा है। जेरार्ड, डोंट बी अ फूल, जेरार्ड बोलता है बेवकूफ मत बनो, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, बोलता है ना अगर तुम मुझे शूट भी कर दोगे ना तो डेफिनेटली तुमको क्या होगी, फांसी होगी ही। इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज अ विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, ठीक है ना। बोलता है कि अगर तुम्हारे खुद के आइडेंटिटी के कारण अगर तुमको फांसी नहीं लगेगी, मेरे को मार के और मेरा आइडेंटिटी लोगे ना, तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के कारण भी तुम्हें फांसी होगी, ठीक है ना, तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। अब ये क्यों बोला भाई? इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। दिस इज योर बिग सरप्राइज, इंट्रूडर बोलता है कि यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड इट आई वाज राइट, बोला ना कि जेरार्ड बोला था ना कि मैं तुमसे बोला था ना कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, और देखो ये सही हुआ। व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, तुमको क्या लगता है, मेरे को बताओ कि आज मैं यहाँ पे हूँ और कल यहाँ से जाने वाला हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुमने कभी भी मेरे अगल बगल में ऐसे व्यापारी लोगों से बात करते हुए नहीं देखा, क्यों? यू से माई हैबिट्स वुड सूट्स यू, तुमने आखिर ऐसा क्यों बोला कि मेरा जो हैबिट्स है तुमको सूट करता है। यू आर अ क्रूक, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, व्हाट डू यू मीन बाय संडे स्कूल टीचर गाइस? अब देखो संडे स्कूल टीचर का मतलब क्या होता है ना कि यूज टू इंडिकेट एन ऑनेस्ट मैन, यूज टू इंडिकेट एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे जेरार्ड बोलता है कि क्या तुमको क्या लगता है कि हम बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अब देखो आगे क्या होता है। द गेम अप एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got on of my men and found things the fool should have burned. Tonight I am expecting trouble. ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, वो बता रहा है कि अब आज मेरे को क्या हो रहा है ना कि मुझे मालूम चला है कि कुछ ट्रबल है, ठीक है।
विदाउट गुड रीजन सर किसी चीज। ओके गाइस, चलिए बहुत सारे बच्चे लीव कर रहे हैं। अब आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ओके, यू पीपल हैव टू रीड दिस, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।